which are known as bases. दो कंपाउंड्स हैं जिनको हम बेस कह सकते हैं. नंबर वन मेटल ऑक्साइड, नंबर टू मेटल हाइड्रोक्साइड. One important thing is the soluble base, those bases which dissolve in water, we call it soluble bases. Soluble base are known as alkali. So in metal oxides, we say all metal oxides are insoluble except sodium oxide and potassium oxide. And in metal hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, they both are soluble. Calcium hydroxide is partially soluble. But one thing about calcium hydroxide is, even for calcium oxide as well, calcium oxide and calcium hydroxide or calcium carbonate, they all used to reduce the they all used to reduce the acidity of a soil. क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ये सारे. जब भी एसिडिटी ऑफ अ सॉइल रिड्यूस करनी होती है, so we can use calcium oxide, calcium hydroxide, and calcium carbonate as well. Let's start with the physical properties of bases. Number one, taste. बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेसिस का बिटर टेस्ट. नंबर टू, पीएच वैल्यू मोर देन 7 बट 8 till 11 वीक बेसिस. 11 इज थोड़ा सा 11 में स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन आता है, वीक स्ट्रॉन्ग दोनों मिल जाते हैं आपको, मॉडरेट कंडीशन होती है. बट 12 till 14 स्ट्रॉन्ग बेसिस. नंबर थ्री, लिटमस पेपर. बेस turns red litmus paper just opposite to acid. Red litmus paper into blue. These are the three physical properties which you need to remember. अब reactions पे आते हैं. There are two reactions of bases जो acid से होते हैं. Acid with metal oxide and acid with metal hydroxide. We are already done in acid class. तो एसिड की क्लास के अंदर हम लोग ने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीजें. तो बेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है which are called ammonium salts reaction. मतलब base, when base reacts with ammonium salt, this is the most important reaction. What is ammonium? सबसे पहले ये समझना अमोनियम क्या है. अमोनियम is a polyatomic ion and it is like that NH4 plus 1. All ammonium salts are soluble. पहले तो ammonium salts के बारे में लिख लेते हैं सीधे. All ammonium salts are, number one, all ammonium salts are acidic. मतलब they behave like acid, so they only react with base and soluble. There are few examples of
ammonium salt. Ammonium is NH4 plus 1. इसके साथ सबसे पहले क्लोरीन मिलाते हैं. क्लोरीन इज फ्रॉम ग्रुप 7, so the charge should be -1. +1 -1 cancel हुआ. We call it ammonium chloride. Next example, ammonium sulfate, NH4 plus 1. Sulfate is SO4. Sulfate का charge होता है, fixed charge होता है. Sulfate is a polyatomic ion. SO4 charge is -2. Charges cross होंगे तो 2 will go with NH4 और 1 will go with SO4 जो लिखने की जरूरत नहीं है. NH4 to SO4. We call it ammonium sulfate. NH4 plus 1, PO4 minus 3. PO4 is phosphate. चार्जेस क्रॉस होंगे. NH4 के साथ 3 गया, 1 जाएगा. PO4 के साथ NH4 3PO4 अमोनियम phosphate. These are the three examples of ammonium salts. तो अब रिएक्शंस कर लेते हैं. When base reacts with ammonium salt, it produces a normal salt. Normal salt का मतलब है जो मेटल से मिलके बनता है. प्लस अमोनियम में से एक अमोनिया गैस निकलती है, प्लस वाटर. अमोनिया गैस के बारे में बता दूं, अमोनिया इज अ बेसिक गैस. वी कॉल इट नॉन एसिडिक. एक और भी बेसिक और नॉन एसिडिक गैस है विच इज CH4, जिसको मीथेन कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं. NH3 एंड CH4 बोथ आर नॉन एसिडिक गैस. एक एग्जांपल कर लेते हैं. रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम एक मेटल है. मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब बेस की बात हो रही है. रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट मतलब अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, बेस है. व्हेन बेस रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट, so this reaction is salt, ammonia gas plus water. Ammonium salts are acidic, but उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है अमोनिया गैस which is basic. Ammonium salts are acidic, that's why they only react with base. They always react with base. तो बेस आपके पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड which is NaOH plus ammonium sulfate is NH4 plus 1. Sulfate is SO4. Charges cross हुए तो NH4 2SO4 बन गया. सॉल्ट बनेगा. सबसे पहले सॉल्ट के लिए वी नीड अ मेटल. मेटल यहां से Na इज पॉजिटिव, Na इज मेटल, सोडियम इज मेटल. Na इसका पॉजिटिव है तो वो NH4 2SO4 के नेगेटिव से मिलेगा विच इज SO4. तो Na इज पॉजिटिव. एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिलता है. Na विल मीट विथ SO4. SO4 इज -2. चार्जेस विल क्रॉस. Na2SO4 बन जाएगा विच इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट, द नॉर्मल सॉल्ट. NH4 में से अमोनिया गैस निकलेगी. जितने जितने ज्यादा अमोनियम होंगे उतनी ज्यादा अमोनिया की प्रोडक्शन होगी. बैलेंसिंग में आसानी रहती है. अगर यहाँ NH4 2 है तो पहले से 2 लगा दो, साथ में वाटर. नाउ वी नीड टू बैलेंस इट. NH4 2 को तो पहले से 2 लिख के बैलेंस कर दिया. देयर आर 2 सोडियम एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी शुड राइट 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल. नाउ वी जस्ट नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन आर 4 2s are 8 यहाँ पे है और यहाँ 2 1s are 2.
So on left hand side, we have 10 hydrogen atoms. So we just have to write 5 here to balance it. Oxygen already automatically balanced for that. So this is the reaction of sodium hydroxide with ammonium sulfate. With ammonium sulfate. We will do other examples later. Right now, I am starting the topic of oxides. There are oxide is a family of oxygen, or we can say that compound of oxygen. Compound of oxygen. There are four types of oxides: acidic, basic, amphoteric, neutral. Acidic oxides are non-metal oxides. Examples are carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Basic oxides are metal oxide. Examples are magnesium oxide, calcium oxide, and so on. Amphoteric are some metal oxides. There are few metals. When they form oxide, so it is known as amphoteric oxide. And why they are known as amphoteric? Amphoteric means they are acidic and basic both. They can dissolve in acid, they can dissolve in base, but they cannot dissolve in water. Some metal oxide, aluminium oxide, Al2O3, and zinc oxide. ये दो याद रखना बहुत जरूरी है according to our course. Neutral oxides are some non-metal oxides. The interesting part is, in the case of acidic and neutral, we use carbon in both the cases. Carbon for acidic as well and carbon for neutral as well. So carbon dioxide is an example of acidic, but carbon monoxide is an example of neutral. Carbon monoxide is harmful and poisonous gas as well. Carbon monoxide, and the most famous compound is hydrogen oxide, which is known as water, H2O. So these are the examples of oxides. Acidic oxides की solubility ये है कि acidic oxides are soluble in water, and once they dissolve in water, they form an acid. SO3 is the best example. When SO3 reacts with water, means when it dissolves in water, it forms H2SO4, sulfuric acid, the strongest acid. We we have already discussed that metal oxides are insoluble in water in the case of base, but except sodium oxide and potassium oxide. All amphoteric oxides are insoluble in water, but soluble in acids and base. Some non-metal oxides, मतलब इसकी solubility ज़्यादा discuss नहीं होती, sparingly soluble in water. That's it. So this is a case of oxide.